also comes over there. Correct. From there, I started reading about business analysis. This is how it is supposed to be done. From there, I discovered Professor Sanjay Bakshi, and one thing led to the other. I also discovered Safal Niveshak, I think 15-16 में. तो वहाँ से I got very fascinated into this field. I think तब सफल निवेशक का एक वैल्यू इन्वेस्टिंग एल्मेनेक भी आता था. I don't know भी आता नहीं आता, but from there I used to read a lot of business analysis. So initially, this is how the journey started. This is how I got very curious into the sport. And I remember I also got books for CFA level 1, studied CFA level 1 की पढ़ाई करी. Then balance sheet, सारे accounting की classes पूरी करी because from non-finance background, right? So needed to make sure कि basics एकदम सही है. So these things really helped me for cracking the interview for the family office. So I came across that opportunity because college 2016 and 2017 March April के पास हमारे exams खत्म हो गए थे. Right, so 2017 mid से that is close to May or June, like बहुत free time था उस time पे. I was searching for an opportunity in finance because I knew कि मेरे को politics नहीं करनी. यहाँ पे लोग नारे लगाते रहते पूरे time, शोर मचाते रहते हैं. So I'm not that type of person. मतलब this is what I figured in that in the politics, जो वो college politics होती है, right? Correct. DU elections, I remember. I've also passed out from DU, so I know what you're talking about. Right. So I actually saw a lathi charge right in front of me over there. So a couple of students, I was like, मेरे को इस field में नहीं आना. मतलब that is how it was. So because it's a bit difficult to see people getting off from their expensive sports cars to go and or expensive cars to go and protest for reservation and stuff. तो एक particular 2-3 communities के बाद protest हुए थे उधर. So it was very difficult to see that कि how does it make any sense, right? Because a lot of political arguments, they don't make sense because you're politically biased. तो अब rationally सोच नहीं पाते. तो वो तो एक decide हो गया था इस field में नहीं आना. Finance में I got very interested, and I think I discovered a lot of YouTube channels also back then. And तो यही Google पे सर्च कर रहा था. Twitter पे उस टाइम पे आया, like Twitter पे I have 3-4 IDs. अगर आप देखेंगे तो Ishmohit के भी कितनी पुरानी IDs बनी हुई है. I don't even remember their like email IDs कौन सी यूज करी थी. So from there I discovered this कि I think जो आशीष किला सर है, इनका एक इंटरव्यू आया था YouTube पे कहीं पे. And एक MOI Global करके भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी वो है. So I discovered him. I saw a couple of his interviews, and then I saw कि अच्छा आशीष किला सर used to be a student of Professor Sanjay Bakshi. So I thought कि इन्होंने एक मतलब ऐसे कहते हैं कि अच्छे आदमी ने जिससे सीखा है वो आदमी भी अच्छा ही होगा, right? तो ये thought process था. So I applied for the interview because he was open for jobs over there. Oh, nice. And I still remember interview में क्या था कि यार the accounting knowledge थी वहाँ पे help हुई कि 40-50 MCQs थे accounting के. Okay. You have to solve all these MCQs, right? And if I'm not mistaken, I got all of them correct. That is fantastic. तो वो थे easy questions थे कि ROE क्या होता है, ROE calculate कैसे होता है, profit upon equity, profit upon capital employed, to just tick the correct one. So because I was doing this for 2-3 years, reading non-stop. Correct. Now it seems like easy when you've been invested yourself for so long. Right. No, actually, I was very immersed into the books. Correct. That is the best way always. Right. So वहाँ से I went for a face-to-face interview, and sir was also surprised. यार आप तो मतलब एक well-to-do family से आते हो, आप under graduation आपने political science में करी है, so why do you want to work? So I explained it to him कि sir ऐसा है कि मेरे को इसमें definitely I want to make a career in this field. And no matter how I do it, whether I go for a research license later, investment advisory license later, or anything else later, but this is what I've decided to do. And he was also very sort of kind and compassionate to sort of take in the request, क्योंकि मेरे साथ जो लोग आके इंटरव्यू दे रहे थे वो फाइनेंस वाले थे सारे, किसी ने MBA in finance करा था, कोई CFA वाला था. तो but because I had read, even till then I had read so many businesses like CCL products, Ambika Cotton, APL Apollo, उस टाइम पे इतने सारे businesses पड़े हुए थे. तो he could sort of, I think, क्योंकि वो भी उन्होंने भी वो सारे businesses पड़े हुए थे, हमारा conversation काफी अच्छा हो गया था. Because I was able to explain that particular business to him कि इस business में सर ऐसा चल रहा है. And I also understood कि यार Indian markets are markets which value growth a lot.
and that is where we have to be a bit more focused as well, and that is what was there in this framework, but it was missing in my framework for at least 2-3 years when I started, because प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि आप वेस्टर्न इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ के आ रहे हो, सो यू आर नॉट एबल टू कोरिलेटेड टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. अब इंडिया की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बुक आने लगी है, जैसे जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग आई, मास्टर क्लास विद सुपर इन्वेस्टर्स आई, राइट. सो उस टाइम तक तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना कुछ था ही नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट आफ्टर 2-3 ब्लॉग्स कुछ ज्यादा था ही नहीं. तो वहां से एक फ्रेमवर्क मिलना स्टार्ट हुआ. तो दैट एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल. आई थिंक आई वर्कड विद हिम फॉर almost 1.5 to like 1.5 years to 20 to 21 months, and we worked on multiple businesses like InfoEdge, DCP Bank, Jubilant Foodworks, Bajaj Finance, Tata Chemicals, all these companies we worked at back then, right? Oh, that is fantastic. These opportunities, matlab, I believe that for the right person guiding you will take you years ahead on your journey than you would yourself figure out and make mistakes. It's like वो गाड़ी में NOS का एक फीचर होता है ना, NOS का, right? Yes. So if you put that NOS on and the car like catches like Blasts a lot of speed, so it's like that, because otherwise what happens is that कि जब तक सर पे deadlines नहीं होती ना, investing is a field where you can fall off to see natural state of human beings procrastination और anarchy है, right? तो अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, डेडलाइंस नहीं है, नहीं पता यार ये करना है या वो करना है, तो फिर थोड़ा सा लोनलीनेस भी हो जाती है और कभी कभी मोनोटनेस भी हो जाता है. तो एक वो एनवायरनमेंट भी मिला वहां से. सो दैट इज दैट आई विल बी लाइक फॉरएवर ग्रेटफुल टू हिम टू बेसिकली गिव अस दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. Fantastic, fantastic. And Ishmohit, like today, what does a day in your life look like? Like, what do you do on a day-to-day basis? यार डे टू डे बेसिस का काम जो रहता है ना, it revolves around 3 or 4 things. First thing that it revolves around is that what am I learning in the day to day, right? कि आज जैसे हम लोगों ने बिजनेस एक वीडियो शूट करनी है शंट रेसिस्टर्स पे, दैट इज ऑन शिवालिक बाई मेटल पे एक वीडियो करनी है, और एक थीम्स फॉर 2024 में करनी है, जिसमें बैंक्स हो गए, लाइक बैंक्स के अलावा लाइक सम ऑफ द लार्ज कैप्स वील बी डिस्कसिंग. तो उसके अंदर भी क्या है कि मतलब टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि कुछ नया सीखने को मिले खुद को भी पर्सनली. तो दिस इज व्हाई यू माइट हैव सीन ऑन द चैनल की ग्रीन एनर्जी से लेके सम ऑफ द मेटल स्टॉक से लेके, केमिकल स्टॉक से लेके, कंजम्पशन स्टॉक से लेके, इंटरनेट बिजनेस से लेके, कैपिटल मार्केट्स बिजनेस से लेके, ऑटो एंसिलरी से लेके, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेक्टर टुडे ऑन द चैनल. आई थिंक 4-5 सेक्टर रह गए जिनको हम एक्चुअली रिसर्च डेस्क में भी हम कवर कर रहे हैं. आईटी स्टॉक्स हम काफी सारे कवर कर रहे हैं उसमें. बट दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटीज इन द डे is that self learning. अगर self learning बढ़िया आएगी ना, तो organization में भी it will start catching on, because a lot of youngsters work with us. The average age of the organization will be 25-26, and मेरी खुद की एज 27 है, तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी मैं ही हूँ अभी. मैं यहाँ पे आई एम द ओल्डेस्ट सिटिंग ओवर हियर, राइट. एंड तो उससे फायदा क्या रहता है कि वी आर नॉट स्टैग्नेंट इन वन सेक्टर. अगर एक सेक्टर में हेडविंड आ गई, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन है, तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको रोड कंस्ट्रक्शन मिल गया ना, तो पूरी जिंदगी आपकी रोड कंस्ट्रक्शन में निकल जाएगी. उसमें क्या है कि यू आर नॉट डूइंग मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग, एंड बियॉन्ड अ पॉइंट अगर उस सेक्टर में 6 साल की हेडविंड्स आ गई, तो यू कैन बी एल्बर्ट आइंस्टाइन इन दैट सेक्टर एंड यू विल सफर, राइट. You can scratch around your head no matter n number of times. So that is the beauty of having this type of a structure where you're a generalist going across sectors. तो पहला तो उस पर्पस ये है दिन का, यार एक चेकलिस्ट बना के चलता हूँ मैं पूरे टाइम, यार ये पूरा करना है. तो जैसे आज की चेकलिस्ट में एक बैंक का काम था, वो लिखा हुआ है, वो खत्म हो गया. 2 इंटरव्यूज हैं, एक इंटरव्यू आपके साथ है, एक इससे पहले था, वो भी हो गया. देन वीडियो करनी है शंट रजिस्टर वाली कंपनी पे, तो आज वो चेकलिस्ट में डाला हुआ है, बट काम उस पर पिछले 3 महीने से चल रहा है बेसिकली, एक इंक्रीमेंटली रीडिंग चल रही है. देन सम ऑफ द 3 थीम्स फॉर 2024, इस पे काम 1 हफ्ते से चल रहा है ऑलरेडी, राइट. Nice. तो बहुत चेकलिस्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, बिकॉज टाइम एट द एंड ऑफ द डे is linked to time value of money, and time is a very important concept, right? Because what you want to be 4 years out or 5 years out from here, you have to reverse engineer that. reverse DCF आपको करना पड़ेगा. और implied expectations क्या है 4-5 साल की, उसको आज से कैश फ्लो ग्रोथ के लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी. या डेली बेसिस पे आई नीड टू वर्क ऑन दिस सेक्टर, I need to work on helping this student, I need to work on this topic to add value to the student's life. So these things we keep doing. I also keep taking multiple challenges,
मतलब डेली इसमें आपने देखा होगा कि हमने अभी एक SOIC क्रैश कोर्स बनाया है, Yes, I राइट? followed that. Yeah. लोग सोचेंगे SOIC मेंबरशिप हो गई, 80 घंटे का तो कंटेंट बन गया, व्हाई SOIC क्रैश कोर्स इज नीडेड? Right. We were actually observing from the back end like only 30-35% of the students were completing the course, and one of the most frequent complaints was ki sir, course is too big for us to complete, and we go to work and stuff. And I was like, ठीक है, इस challenge को भी solve कर देते हैं. We introduced the crash course ki we compress those 80-85 hours of learning into 25 to 30 hours. And again, that was a fun thing to do क्योंकि we challenged ourselves कि यार इस चीज को हम कैसे कंप्रेस करके सिर्फ मेन पॉइंटर्स ही सिखाएं, राइट? Right. एंड अगर किसी को जैसे कैश फ्लो बारे में सिखाया, अब किसी को कैश फ्लो बारे में और सीखना है तो वो बाकी जाके सीख ही सकते हैं 4 घंटे का, राइट? तो बोथ एक्सेस द पर्सन हैज, but our job was done in a period of 2 to 3 months, and the course completion rate has gone to 65-70% post that, कि जिन्होंने Okay. नहीं देखा था उसमें से हाँ. 70% लोगों ने क्रैश कोर्स देख लिया. So purpose is getting fulfilled actually. They're benefiting from the course. correct. That is fantastic. And Ishmohit, you just touched upon कि आगे से prediction करके फिर reverse DCF करना पड़ता है. So my next question to you is like, what is like some of the most interesting parallels that you've drawn from investing that you've also applied to your personal life, and like what are some of your own favorite mental models that you've come across over the years? I remember starting we used to make videos. You start with a mental model. You explain the mental model for 2 to 3 minutes, and then you move on to the business analysis. So what have been some of your favorite mental models over the years? I think one of the favorite mental model comes from the field of chemistry, which is that of friction. Okay. अगर मेरे को कोई चीज नहीं करनी ना, तो आई एक्सप्लेन वन ऑफ द बैड क्वालिटीज अबाउट मी आल्सो. इफ आई डोंट वांट टू डू समथिंग, राइट, तो वो मेरे स्केड्यूल में पार्ट ही नहीं होएगा, एंड नो मैटर कोई मेरे को फोर्स करते रहा करने के लिए, मैं करूंगा ही नहीं. ऐसा सीन है. तो लाइक आई डोंट रन एनी एरंड्स एट माय हाउस, राइट? Okay. कोई भी अगर काम देना है मेरे को, तो आई विल बी आउटसोर्सिंग दैट टू समवन एल्स, राइट? तो आई से नो वेरी क्विकली to a lot of works which I don't want to do, because again it's back to the TVM concept, time value. And because I think यार ये काम तो कोई और भी मतलब कर ही सकता है, तो I'd keep outsourcing those works, even though some people think it's a bad quality about me, but that is friction which comes into my daily schedule. तो friction नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि I don't sleep as a happy person if I don't learn something new in a day. मतलब जनरली आई फील डिससैटिस्फाइड और वेरी अनहैप्पी अगर मैं कुछ नया सीख के ना सोऊं. तो दिस इज अ हैबिट व्हिच इज देयर. सो दिस इज व्हाई ऑल माय फैमिली मेंबर्स आर वेरी कोऑर्डिनेटिव, एंड दे नो कि इवन दो ही डजंट से इट, बट ही स्टार्ट्स बिकमिंग अ बिट इरिटेटेड अगर हम इसको कोई एरेंड्स या ऐसा कोई काम वाम दे दे. सो बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ तो बहुत एरेंड्स आते थे पहले. मैंने एक बार आके बोला कि भैया मैं नहीं करने वाला ये सब, क्योंकि मतलब ग्रोसरी जाने, मतलब लिटरली अब तो ब्लिंकिट से मंगा लो, लिटरली. तो आई हैव टॉट माय ग्रैंडमदर हाउ टू यूज ब्लिंकिट. आई हैव टॉट देम कि यार इसको कैसे यूज करना है, तो वो खुद ही कर लेते हैं. तो वो एक बहुत मेजर चीज है जो आई थिंक फ्रिक्शन इज वन ऑफ द मेंटल मॉडल्स दैट एवरी इन्वेस्टर मस्ट इनकलकेट, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू स्टार्ट एनालाइजिंग इज दैट जो ब्रॉड आउटकम्स होते हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट यू टेक ऑन अ डेली बेसिस. एंड अगर आप daily basis पे if you waste like more than 30-35% of your day on what you don't want to become over a period of time, then again time value and friction cause कर रहे हो आप अपने खुद के end goals के साथ. तो एक वो है. second mental model compounding का बहुत important है. तो I think boards के बाद ना I became very chubby and fat. Because sitting and reading, I understand. मतलब मेरे खुद के friends खुद के साथ भी ऐसा रहा है, like you sit and read and study all day. And you also belong to Punjabi family, so you might have seen कि they keep serving you ghee wala roti and ghee wala paranthi and these things. You should eat it and you'll become like sharper and stuff, right? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, बंदा खा तो लेता है बट कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं रही होती. Yes. और आप खाई जा रहे हो और बैठ के पढ़ रहे हो और फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही, तो व्हाट हैपेंस इज दैट नेचुरली वेस्ट लाइन स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, राइट? एंड इट इज नॉट दैट कि मतलब अगेन आई एम आल्सो वेरी ओके विद पीपल द वे दे वांट देमसेल्व्स टू बी, बट फॉर मी इट वाज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल कि
I don't, I want to have a very basically type of, I want to be very healthy in terms, I just want to live a healthy life, even though मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि यार मतलब बिल्कुल चिल्ड मिसिल्ड होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, just want to look healthy and be healthy, that's it, right? तो कंपाउंडिंग वहां से एक स्मॉल एग्जांपल है, तो आई जस्ट मेड दिस फॉर श्योर कि even though I don't do gym for more than 30-40 minutes in a day, maximum I go 3-4 times in a week, but I make sure that I'm going 16 times in a month, and minimum I'm getting in 150 to 180 workout sessions in a year. That is also a checklist I feel कि वो भी आप टिक कर रहे हो अपने लिए. पर उसमें कंपाउंडिंग वर्क करता है. एनीथिंग दैट यू वांट टू गुड एट, यू वांट टू बिकम गुड एट, जस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ DCP. What is DCP? First is discipline, second is consistency, third is patience. Disciplined enough to take the action, consistent enough to sort of repeat the actions again and again, and patient enough to see the fruits coming out in front of you. Fantastic. Got it. That is really amazing. And so now just turning up the wheel a little bit towards the SOIC as an organization. So I just wanted to ask, first of all, like the stages for you, like how do you feel SOIC has grown? Like, are you tracking some metrics for your own self that you feel proud of over, say, last 3.5 years that you've been working? That, okay, we were focusing on this metric and it has performed well. Also linked with this question was, I remember in the J interview, you said you had made a few videos back in 2019 on YouTube. But you did not get traction. So what changed the second time around you started making the videos? Like, did something change that allowed you to take the spark and continue to grow? I think earlier we were doing it sort of मतलब phone के selfie camera से बना रहे थे video, and you know, like, so whenever you are doing a visual depiction, so human brain का जो cortex part है जहाँ पे processing होती है, 60% of it is visual cortex, right? So human brain understands things in pictures. Right, so whenever you're doing video making, also a suggestion to you as well: bright lights, epic sound, and third, epic content. These three will be more than enough. But if you just have epic content and lights are dim or sound is not there, so then because the human brain works in that way, so it doesn't get appreciated by the YouTube algo as well. And fourth thing, अब ये clickbait भी लोग करते रहते हैं, मेरे से नहीं होता, तो वो ग्राफिक डिजाइनर है, वही दिमाग लगाते हैं उस दिन पूरा वहीं पे बैठ के, तो दैट इज व्हाट ही वर्क्स ऑन. तो अर्लियर आई वाज जस्ट मेकिंग कि यार एक सेल्फी से कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, तो उस पे एक वीडियो बना के डाल दी 5 मिनट की, राइट? So that is, again, now if I do a video on operating leverage, you might have seen, so it's a 1 hour video. Yes, I saw that video. I think over internet you won't find as detailed as a video on operating leverage that we have made on the Indian context. Definitely in the Indian context, so I don't think anybody is even attempting to make such detailed analysis. I remember back in 2018-19 when I was also searching, there were like some channels who, I remember they used to copy the pros and cons list from Screener. कि cons जो Screener जैसे लिख देता है ना अपने खुद के sentences में, they used to copy those. So actually we follow the DCP principle even in content creation, is that I think some of these videos that we do, people don't know what goes behind them, but sometimes it is 8 hours of work, sometimes it is 50 hours of work, sometimes it is just 2 hours of work because I've read the company over a period of time. But that's the purpose कि pros and cons तो कोई भी आके पढ़ के दिखा देगा, ये चार्ट है, ये pros and cons है, देख लो. And then if the stock works, then you start taking victory laps all over Twitter, देखा मैंने बोला था. That is not how the real process is, right? Because if someone wants to really put in large sums of money, जैसे अगर हमारे समय में के केस में allocation बढ़ाना है, for example, you need to understand कि business पे चल क्या रहा है. Without it, तो आप वो 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो बिल्ड करके बैठ जाओगे और उसमें जो भी 2 स्टॉक चलेंगे कहेंगे देखा मैंने बोला था. That is not the correct way. But yes, you should also need understand is that where to draw a line. इससे ज्यादा काम की जरूरत नहीं है. I have enough information already. So you're using the Pareto principle. Is that 80-20 rule? यार 80% information मिल गई, it is more than enough. Last 20% के लिए कई लोग effort बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, और उस केस में कभी कभी क्या होता है, you end up missing the opportunity. So that you can deal away with sizing in your portfolio level. तो ये एक important चीज है. मतलब मेट्रिक्स हम जो SOIC में ट्रैक करते हैं, एक तो हम ट्रैक करते हैं कि कई लोग तो अपना सब्सक्राइबर ग्रोथ ट्रैक करते हैं. वी डोंट ट्रैक दैट. वी मोस्टली ट्रैक की amount of content viewed, like the number of hours spent, Watch average hours. right, average duration per video,
So I think our watch hours अभी कुछ 900 hours to 1000 hours के बीच में चलता है per day. यूट्यूब चैनल पे. आई थिंक वो उसी पे जो दिखता है उस पे, हाँ राइट. हाँ, आई थिंक वो मंथली का आता है मंथली शायद 28 days का डिफॉल्ट व्यू रहता है राइट उसमें राइट, एनालिटिक्स में. मंथली आता Yes, है. एंड समटाइम्स एवरेज व्यू ड्यूरेशन ऑफ अ वीडियो इज 15 minutes. that is unheard of, I would say, मतलब given the attention spans we have on reels these days. So that is the key metric that we track कि यार किसी की जिंदगी के 15 मिनट ले लिए, चाहे 15 मिनट में अगर वो कुछ सीख के भी चला गया ना, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज वाली वीडियो, कोई इंटेंट है ही नहीं कभी भी स्टॉक टिप्स देने का यूट्यूब चैनल से, दैट इज अ जीरो इंटेंट. बट किसी ने ऑपरेटिंग लेवरेज वाली वीडियो देख ली और खुद वो मेंटल मॉडल यूज करके खुद की जर्नी में लगा के ही डज वेल, चाहे बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज लगा लिया अपने मेंटल मॉडल, चाहे किसी स्टॉक पिक में लगा लिया, हमारा पर्पस पूरा हो गया, राइट. बिकॉज सी स्टॉक पिकिंग इज सो डायनामिक, इन्फॉर्मेशन कीप्स चेंजिंग. एक बिजनेस जिसने एक साल में बहुत अच्छा करा, मे बी नेक्स्ट ईयर हेडविंड्स कम, राइट. So it's very difficult to thumb hold someone to take buy and selling transactions. So this is why our channel from day one has been based on the idea of educating people and not getting into stock tips. That is fantastic. And I was just also asking, like, you have a business side of SOIC as well, where you're running your own membership program for multiple years. So, like, have you been tracking that? Like, आपका खुद के business के आपने RoCE या RoE निकाल के calculate कभी करा है? खुद के business का यार RoE, RoCE. So we do have an ERP, right? तो छोटे बेस पे ही हमने ERP लगा दिया था to track. But also one of the things that we do is that कि हम लोग क्या ट्रैकिंग करते हैं कि लोगों को सेटिस्फैक्शन क्या था. अगर किसी ने कैश फ्लो की क्लास अटेंड करी, उसके बाद उनसे फीडबैक पूछेंगे आपको कैसी लगी क्लास, राइट. बैलेंस शीट की क्लास करी तो आपको कैसी लगी क्लास, बिकॉज अ हैप्पी स्टूडेंट विल कम बैक टू लर्न समथिंग एल्स. सो आई थिंक more than 85 to 90% of our students are repeat in nature. Okay. Which That is like, that is I think absolutely amazing, because return rate like 30% भी होता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि churn नहीं आ रहा है खुद के like customers and students में. हाँ मतलब एक्चुअली मैंने कभी इनका मतलब the way we have thought about it is कि if we have one webinar and I think it's at minuscule 499 के प्राइस पे let's say, तो the value should be such कि things क्या है तो 5,000 का पढ़ा दिया इन लोगों ने, right. So that is the motto with which our content is made. अगर अभी किसी ने वैल्यूएशन वेबिनार कराएगा, अगर आप आए थे उसमें, आई थिंक उसका क्या प्राइस है, इसी 600-700 रुपए का है. बट जो उसमें पढ़ाया दैट इज फ्रॉम एटलीस्ट 50 बुक्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लाइव केस स्टडीज. जैसे आज से 2 साल पहले वैल्यूएशन वेबिनार करा था, तब एपीएल अपोलो और केईआई का कैश फ्लो मॉडल बनाया था, राइट. एंड अगेन द थिंग्स दैट वी बिल्ट आवर assumptions on, some of those have ended up playing out. So students get the real learning over there. मतलब किताब लेके पढ़ा के ज्ञान देना तो वो उसमें कोई मजा नहीं है, right. You have to teach them through case studies. So do things in such an authentic way that you don't end up competing with anyone in this field, and that I truly believe is something that anyone can do in their own like field of life and purpose, wherever they're unique and doing something which no one else is doing, right. And आपका कंपैरिजन खत्म हो जाता है लोगों के साथ. यू डोंट थिंक यार ये क्या कर रहा है, आप ये नहीं सोचते कि ये वीडियो में आके डांस वांस कर रहा है, इन सबको नहीं देखना है क्या कर रहा है, राइट. बिकॉज इट्स काइंड ऑफ फनी दैट कि some of the videos that I've seen on YouTube on finance, a lot of basics are also incorrect. So that is actually harmful, because like rather than learning, the person is learning the wrong thing. मतलब कोई कप एंड हैंडल, लेफ्ट हैंडेड कप एंड हैंडल बना के दिखा रहा है, कोई XIRR का किसी को फॉर्मूला नहीं पता बट XIR पे वीडियो बनी हुई है, किसी को एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR के बीच का डिफरेंस नहीं पता, बट ठीक है, people are watching. It's totally okay, right, कि what people are consuming. But I'll still say, even if you watch our videos, go and Google the content that we have made on. अगर operating leverage पे बनाया तो read about operating leverage on Investopedia. And it could be कि we have also made a mistake. We'll be humble enough to admit that. But idea is to be so thorough in your own work for any video or any webinar that you do, is that people take the correct knowledge, the right knowledge, and people are happy that they even forget the time that they've spent, and they can use those learnings whether in their own business, whether in their own life, or whether in their own investing journey. So that's the real motto if you ask me. अगर उनके अराउंड हम कुछ metrics track कर रहे हैं कि रिव्यूज कितने आ रहे हैं हमारे कोर्स के,
लोगों को कैसा लग रहा है, रिपीट लोग कितने आ रहे हैं, that those are the metrics that we are tracking. जैसे रिसर्च डेस्क है, तो रिसर्च डेस्क में SOIC स्टूडेंट्स कितने आ गए रिसर्च डेस्क में, तो पॉजिटिव रिव्यूज कितने आते हैं लोगों को, मतलब एक्चुअली में वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ field where you want to be a push based seller, right? Because a lot Yeah. of people do push People are. marketing. Yes, they do. It's incorrect. This is a pull based field. If you're doing well, if there's a positive word of if there's a positive word of mouth, people will automatically come. But people will automatically come if you just lay sugar on the floor. Only then ants will come. What is the sugar? That is more value versus the time that you're giving us. No, actually, that is the exactly correct metric, I would say. I remember back when I subscribed to the tribe, I had first bought your chemicals webinar. I think that was one of the first ones you had done. And banking या chemicals was one of the first ones. So I bought the chemicals का standalone I purchased. And उसको देख के I was like, okay, this is actually worth the value. And then I went ahead and purchased. And back then, I think you were not even yearly. You were just like if lifetime course was there. And that was like, you're totally spot on when you say like you, whatever you charge, you provide much more value in comparison to that. I think chemical webinar we did in December 2020. A lot of these chemical businesses did very well after that also. And banking webinar we also did when banks were going through very high GNPAs. तो अभी तो लग रहा है बैंकिंग का टाइम आ गया, तो अब FIIs आएंगे तो बैंक ही खरीदेंगे. Right. Correct. On that front also, what are some of your future plans, and how has the research desk that you opened, how is that faring? Like, is it like as per your expectations, blowing your expectation? Like, and what are some of the future plans you have with regards to the organization? तो अभी तो expectations कुछ खराब ही हो गई हैं, उसके अंदर लोगों की खराब हो गई, मेरी तो ठीक चल रही है एकदम, because the markets have been just in a one-way rally for last 4 to 5 months. Right, so we started like 3 months back, but our idea is to mellow down their expectations, ki have low expectations. These things don't last forever, right? So that is something that is worth understanding. And our thing is ki we are trying to write very detailed reports over there. तो अभी हम एक ग्लास पैकेजिंग कंपनी पे आज से 3-4 दिन बाद एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, तो दैट्स अ वेरी डिटेल्ड वन. फिर हमने एक IT प्रोडक्ट कंपनी पे रिपोर्ट एक लिखी हुई है, तो अभी उस रिपोर्ट को रिड्यूस करा है, अदरवाइज दैट रिपोर्ट वाज आल्सो वेरी डिटेल्ड. सो आइडिया इज टू अगेन give them the rationale for buying something, not just, but again markets will be up and down, so expectations will go up and down. So I'll just say कि अगर कोई सब्सक्राइबर ये देख रहे रिसर्च डेस्क का, तो एक्सपेक्टेशन लो ही रखना. वो मार्केट like market moods should not decide your expectations. जैसे चार्ली मगन ने कहा था कि the secret for a happy marriage is low expectations. So the idea is to have low expectations, only then the marriage will be happy. Correct. If you have very high expectations, तो हो सकता है कि हर बार आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर ना आए, राइट? सपोज इफ यू आर इन सपोज आप किसी को डेट कर रहे हैं, इफ यू आर डेटिंग समवन एंड the expectations become very high, every time he'll come, he'll get a gift, something or the other. So best is to have low expectations and then to surpass them, right? तो वो है. Yeah, we are going in this direction only. So we're working on our first ever book. सोचा था पहले दिसंबर में निकालेंगे, बट आई गॉट सो मच मोर कंटेंट टू ऐड कि आई पुट इट ऑन द बैक बर्नर अ बिट, बिकॉज mid of 2024 or end of 2024 is now what I'm targeting. But I was going to actually ask you. I remember I saw your tweet that you're working on a book, planning on a December release. I was actually wanting to know ki, is there an update? Are we getting a release date soon? No, there is an update on that. I've written the entire book in a story format. Okay. अगर किसी को RoCE सीखना है, किसी को सीखना है बैंकिंग में क्या चलता है, इट्स इन अ कॉन्वर्सेशन फॉर्म, तो इट वोंट बी बोरिंग एट ऑल. मतलब क्योंकि फाइनेंस में ना पहली चीज लोग बोर क्यों होते हैं, क्योंकि है ही बोरिंग, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है. बट अगर आप उसको स्टोरीज में कन्वर्ट करके, पिक्चर्स में कन्वर्ट करके आप सोचो, तो देन इट बिकम्स अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, एंड स्पेशली फॉर यंगस्टर्स हु आर गेटिंग इनटू दिस फील्ड. सो उनके लिए दैट बुक विल बी ऑफ अ रियल वैल्यू ऐड, क्योंकि आई थिंक कि ऑन डिफरेंट सेक्टर्स this probably will be the first book that comes out in India which covers each and every sector in depth, that too in a conversation form. Yeah, I'll be waiting, because the way you do, because the case study format, I remember even Warren Buffett said if you were to teach a stock market class, तो वो भी case study by case study ही कराएंगे, because that is the real way to learn. And I believe जब आप भी book लिखेंगे, जो भी आप content बनाएंगे, तो वो case study से भरी होगी, which is the best form of learning, especially at least in the stock market sense. Correct. Right.
Okay, so just now let's get actually the meat of the matter, and let's get into investing. That is everybody's most wanting. Then you want to know the most about from you. So I would want to know ki how has your investing evolved over time, and today what would you call yourself as the type of investor? Would you call yourself a GARP investor or a deep value investor, or something else entirely? I'll just call myself a probability based investor, because at the end आप ना वो गार्प कह लें, डीप वैल्यू कह लें, मोमेंटम कह लें, टेक्नो फंडा कह लें, या फिर वैल्यू इन्वेस्टर कह लें, at the end what you're doing is that you're assimilating all the probabilities. आप सारी probabilistic scenarios को बना रहे हो, and then you're taking a bet on the particular stock, right? So on the same stock, I've changed my mind 4 or 5 times in 4 or 5 years. I actually remember back from 2021, I think Heikel just, and by the way, disclosure to anybody who's watching, please don't take stock tips from videos on the internet. Please apply your own brain because it's your own money. None of this is financial advice. I remember you talking about Heikel, and then something changed in terms of the management, and I'm forgetting, maybe they did some related party transactions. And also in Sequent, I remember some Turkey related issue happened. And then a lot of things happened. So it was really fun to see things play out in real time. What you were teaching, you were yourself applying. Right. So basically, the first business that you mentioned, so again, value versus price. So it was a 10 times P multiple post-COVID. Wow. And 10 times P multiple business getting tailwinds. So from there, 10 times went to 40-45 times. तो आपके odds यहीं आ गया. आपके odds ना 10 times पे अलग होते हैं और 45 times पे अलग होते हैं. आप 45 times पे आप नहीं bet कर सकते कि 100 times पे जाएगा. That is wishful thinking. And 100 पे buy करना तो फिर shooting yourself in the foot, like एक पैर से रेस दौड़ रहे हैं. Actually में IEX में लोगों के साथ यही हुआ. IEX लोग तब देख रहे थे जब वो 100 की पी पे चला गया था. Even I remember IRCTC, like when it had the like proper ऐसे convex shape में ऊपर चला गया था, then some of my friends got in and they got stuck. Right, actually it's like herd behavior जो हो जाता है, because at the peak what happens is that everyone owns the same stock. आपके पड़ोसी हर किसी के पास वो same stock होता है, and there is an accelerated trend line which gets made. So I think the real change which has happened over the last 4 or 5 years in the investing philosophy has been is that now there's a rigid selling framework that is in place. Right, so जैसे I used to have these 3 stocks: energy exchange, animal API company, and bromine company. So out of these 3 stocks, एक बड़ा simple फंडा था यार, इनका peg ratio above 3x चला गया. I need to get out of them. So I got out of the bromine company, right? Like the energy exchange also I basically got out of, not at the peak, so 10-20% before the peak. And then also animal API company I couldn't basically get out of. So whatever gains I had made, they evaporated. And they came back to my buying price of 5-10% below that. So then I finally ended up getting out because stock, जैसे chart के parlance में कहते हैं, stage 4 में चल रहा था. And the management has also resigned. So the idea is to identify is that कि if you're even doing fundamental analysis, you must have some parachute with yourself. Parachute means is that कि अगर plane में कुछ हो गया तो I have a parachute to jump. And that selling framework either could come via reverse DCF, expectations exceeding a lot in a particular stock, or B, your initial thesis not playing out, and C is that if you have a technical based exit trigger. So those are the 3 things that really worked on in the investing journey over the last 4 to 5 years. And finally, I can say कि कुछ structure है अब selling के लिए. And because selling is a dark continent of investing, no one teaches you that, no one even talks about it. But you only make money once your paper gains are converted into like proper gains, right? So selling की कोई बात नहीं करता. So selling हमने बहुत inculcate करा thinking में. फिर second क्या inculcate करा कि पहले मेरे को लगता था कि यार मैं ना कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस नहीं देखूंगा, मेरे को जो नहीं समझ आता मैं वो नहीं देखूंगा, मेरे आउट ऑफ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं रियलाइज कि यार ये बहुत ही एक ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है कि हर चीज को आउट ऑफ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बोल दिया, राइट? बिकॉज इफ यू डोंट स्पेंड टाइम टू एक्चुअली लर्न अबाउट इट, यू विल एंड अप मिसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? हो सकता है जैसे मैं PS यूज नहीं करता, बट आई कैन similarly do things which in private sector are trading at similar multiples or are in a similar factor. So it's not that कि you have to get biased about stuff in investing. तो आपको बस framework आपका सही रहना चाहिए. You have to keep evolving as an investor. And thirdly क्या होता है
कि the older that you get, the more biases you collect as an investor. So like if you talk to any old investor who might have lost money in a particular sector, if you talk to him about that sector, na, he'll say नहीं इस sector में तो नुकसान ही होता है, because it has happened with him. So that is why he has created a stereotype. And also if you do scuttlebutt, तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये स्टोरी बताता हूँ. तो मेरा एक फ्रेंड है, टाटा एलेक्सी में काम करता था. तो 2019 में कंपनी में बहुत काम कर रहा था. मेरे को लग रहा था इसमें कुछ हो सकता है कि अभी जैगवार लैंड रोवर का इशू टेम्पररी है, दिस इशू विल गेट रिजॉल्व सून, राइट. तो मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को इतना डरा दिया. उसने बोला कि यार यहाँ पे तो प्रोजेक्ट मैनेजर ही बेवकूफ़ हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, खुद ही ऑफिस नहीं आते, ऐसा नहीं करते, वो नहीं करते. तो उसने मेरे को इतना बायस कर दिया कि मैंने कहा यार ये तो इनका एक्स एम्प्लॉई आके मेरे को इतना डरा रहा है, तो मेरे को देखना ही नहीं चाहिए. एंड इनिशियली थीसिस था कि यार एंडी बिजनेस है, कुछ डिफरेंशिएटेड है वर्सेस सर्विसेज बिजनेस. तब स्टॉक 400-500 रुपए या 600 रुपए का आता था, समथिंग अराउंड दैट. Once the tailwind struck, it went to become a 15-16 bagger from there, right? तो स्कटलबट से या फिर किसी के ओपिनियन से बायस नहीं होना, ये भी एक लर्निंग आपको ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगी जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. क्योंकि हो सकता है कि उनका ओपिनियन पुराने फैक्ट्स पे और नए फैक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं. तो एवरीथिंग दैट यू डू, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. पास्ट में कभी कभी क्या होता है, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ गोइंग टू एनुअल रिपोर्ट्स 20 years बैक एंड फाइंडिंग देखा इसमें गवर्नेंस इशू है. या 20 साल पहले प्रमोटर को मार्केट कैप अप्रिसिएशन कहाँ थी. नेक्स्ट जनरेशन आती है तो कितनी चीजें चेंज होती हैं. नेक्स्ट जेन आती है, चीजें चेंज हो जाती हैं, लोगों को मार्केट कैप की अप्रिसिएशन बढ़ जाती है, राइट. सो आई थिंक दैट्स द रॉन्ग वे टू इन्वेस्ट इन माय ओपिनियन, कि वेयर यू बिकम एन अकाउंटेंट and you keep scrutinizing each and every transaction. That's not the correct way to invest. Correct way is to focus on the business where the earnings are going growing or not, and focusing on कि यहाँ से इस business की competitive advantage solid हो रही है नहीं हो रही है. Then charts पे आके stage 2 में देख रहे हैं नहीं देख रहे, reasonable valuation है या नहीं है. बट दिस वे ऑफ इन्वेस्टिंग, ये इंजीनियर्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जितने भी इंजीनियर्स ये सुन रहे हैं, मैं आपको पहले ही डरा रहा हूँ कि आप लोगों के साथ ये होएगा. तो मेरे को सारे खराब क्वेश्चन इंजीनियर्स के याद हैं, और मैं एक स्टेज के बाद इरिटेट हो चुका हूँ उससे कि आप 15 साल पुरानी एनुअल रिपोर्ट खोल के कह रहे हैं यार 15 साल पहले इस कंपनी में गड़बड़ थी. उसका आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, मतलब सीरियसली उसका कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको. यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 3-4 years. लास्ट 3-4 years में कंपनी में कोई इशू नहीं है, द कंपनी हैज डन रीजनबली वेल. So you yourself are creating your own barriers in your mind that you're going 15-10 years behind. Look at an issue which happened in 2010 or 2012. तो बहुत biases को हटा के चलने स्पोर्ट में. That is one of the more key learnings that I've had, because a scuttlebutt भी किसी का भी opinion वो होता है जो उनके साथ हुआ होता है उसके साथ, right? So उनका opinion, हर किसी का opinion एक तरीके का biased होता है. So you have to focus on the pure hardcore facts. Ignore the opinions, right? Because जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं काफी लाइक क्लोजली काम करता हूँ. So वो ये ना बोथ वर वर्किंग ऑन एंजल वन. तो मैंने उसको बोला यार तू एंजल वन पे काम कर ले, मैं एक कमोडिटी एक्सचेंज पे काम कर लेता हूँ, राइट. तो हिज ओपिनियन वाज कि नहीं यार तो ब्रोकर है, इसका तो ऐसे हो जाएगा, अर्ली साइकिल प्लेस है, अभी तो इनकी हालत खराब है. आज से 1 साल पहले की बात है. एंड नाउ स्टॉक ऑलमोस्ट 150-160% बढ़ गया वहां से. So I was just doing this exercise with him. He's also very open in terms of taking feedback from me. मैंने बोला भाई तू biased था उसमें, तूने मंथ ऑन मंथ तो ग्रोथ ही नहीं देखी FNO और मंथली यूजर्स में आ रही है. Like you were biased in that sense कि with your past opinions of brokers जो past cycles में हुआ था, you didn't look at the new facts which emerged to light, right? तो वो जो bias है ना उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, because हमारे दिमाग में आके वो जम जाती है. And that is why Charlie Munger and Warren Buffett say कि any year in which we haven't killed our own beloved ideas is a wasted year, because you're not able to change your mind on particular ideas. So वो जो biases है ना उसको हटाना बहुत जरूरी है. The more you become involved in this field, the more you will realize कि yeah, this is the real challenge. It's not that the IQ part is the real challenge, but the EQ part is the real challenge, right? God. Even I remember Vijay Kedia telling in an interview कि promoter को ही नहीं पता होता कि उसकी कंपनी कितनी बढ़ेगी. So like अब scuttlebutt भी promoter के साथ करे. Even promoter can have his own or his or her own bias. And शायद वही अपने आप को भी शायद कोई opportunity miss कर रहे हो जो नहीं ना पता लगे. So that just shows कि nobody knows. मतलब ऐसी stories है कि मतलब actually some of my friend they work on the PMS side as well. So like I was speaking to one of the PMS managers. So we were speaking and like यार ये business has done so well, 10-15x हो गया stock and stuff.
So he was like, the promoter is invested in our PMS, and he himself was saying our business is so volatile, don't put money in our business, right? And in 2 years, that stock became a 15 bagger. So wow. बायस होती है, बायस को जितना मतलब प्रमोटर का भी तो ओपिनियन नहीं है, प्रमोटर इज आल्सो ह्यूमन. Correct. In a bearish sentiment, the promoter will say कि we won't be able to do this, do that, and etc. In a bullish sentiment, the promoter will become over bullish. Simple reason, ऑपरेटिंग लेवरेज और लेवरेज का खेल होता है. लेवरेज क्या होती है? एक तो ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या होता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट लार्जर बेस पे डिवाइड होते हैं, तो ये मार्जिन एक्सपैंड. So that leads to a lot of explosion in profitability. And all leverage क्या होती है? Tailwinds का leverage होता है कि when tailwinds come ना, people fail to realize is that tailwinds a lot of times last for 2, 4, 5 years. Tailwinds कुछ सेक्टर में होता है कि बहुत स्मॉल साइकिल्स होती है, जैसे शुगर सेक्टर है, कभी चीनी के दाम बढ़ गए, कभी घट गए, कभी बारिश ज्यादा आ गई, कभी बैन लग गया और वो अनबैन हो गया. आई थिंक कल या आज की न्यूज़ है, when they unbanned sugarcane for ethanol mixing. शुगर केन जूस फॉर एथेनॉल Yes. प्रोडक्शन, राइट. तो वो एक प्रॉब्लम ना ऐसे सेक्टर में होती है. बट जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, अब लोग आज भी स्केप्टिक है, बट लास्ट अच्छी साइकिल 2003 से 9 के बीच में आई थी, 6 साल की अप साइकिल थी. पोस्ट दैट वी हैव हैड अ 13-year डाउन ट्रेंड और अ बेयर साइकिल, राइट. तो दिस टाइम इफ ऑल द डेवलप, आज से 1 साल पहले ऑल द डेवलपर्स वर बुलिश, FIIs वर बुलिश, DIs वर बुलिश, बट ओनली गाइज हु वर नॉट बुलिश इज द रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट. So a lot of times things also change, and that is also a type of a leverage. When the tailwinds come, they last for a couple of years. So that cycle you'll also need to understand कि हर एक sector का profit cycle है. Some sectors go through profitability cycles as well, where they're able to grab market share, grow well, and sometimes there will also be a downturn. जैसे आज chemical industry में, shrimp industry में, तो shrimp industry का जो downturn था, that has lasted for almost 7 years now. Chemical industry का जो downtrend है अभी 2 years से चल रहा है. We don't know when the upturn comes, but promoters are going ahead with the capexes that they're doing, right? So again, you have to sit down and separate the wheat from the chaff, and just look at how to sort of think about कि यार ये near term issue है या long term issue है. And also that's a type of a leverage, right? Because when the tailwinds come and if your capexes are done, so again operating leverage cycle kicks in. Yes. Valuation expansion cycle, everything will kick in again. I think the book Capital Cycle is the best book on this topic. It explains so beautifully कि अभी जो retail investors जब तक bullish होंगे तब तक वो इतनी देर हो जाएगी कि the cycle might be on the cusp of turning downwards, and then people will again probably maybe lose money and then blame कि ये तो ऐसी है, या फिर they're not able to identify where they went wrong. So the cycle is like people who get into blame game na, they rarely make money in the markets, because at the end of the day, it's your own money, it's your own thumbs which are doing the buy and sell transaction. Correct. And it's your own brain which is doing the calculation. So don't be monkey see and monkey do type of character in investing. Be like monkey sees, then he thinks, and then he does. That is the type of investor. Which is why it's like so. Like on Twitter and like YouTube comments, people are like, you recommended XYZ stock, it's not performing, why are you saying? And then I'm always thinking, it's your money. Like even if you make money, then you don't come and appreciate the person who helped you. But whenever something goes wrong, you'd make sure to point it out. So similar example is that we covered a steel tube business. I think my side the business analysis is stock went to be a 10-12 bagger. We didn't know it will happen, right? But there were changes which were happening. Then we covered another business which fell by 30-40%. So we get more questions on the one which fell 30-40% rather on the one which went up by 12-14x. Reason being because loss aversion hai na. Monkey sees, monkey doesn't think, then loss aversion, right? तो हमेशा यही रहेगा यार. ये तो लॉस एवर्जन तो नेचर है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स का, राइट? सो दैट विल ऑलवेज पर्सिस्ट. Right. And Ishmohit, on the front, like you said, you've developed the selling part of investing over the last few years, and I've personally seen that as well. I remember back when in an animal pharma company, your selling was based on the thesis when something broke down in a export market that they were serving. And with time, it's like involved a lot where you have a special section on your Tribe, your course as well, where you mention how you use different indicators and how you use technical analysis. And I think that definitely helps. I wanted to just ask, it was just like a very curious question. Say a market meltdown happens at some point in the future. And that case, definitely almost all your portfolio companies will break down all the rules that you have mentioned. So in that case, will you sell all of them, hold on to cash? Like what would be a scenario then? Like how would you be prepared to take advantage of a meltdown in the market? I'm not talking like 5-7% correction, but probably like 15-20% plus index level correction.
you're talking about कि COVID आ गया वापस तो Yes, types, COVID 2008, something like that happens and everything fails. Then like, how do you handle that situation? simply elongate the time horizon in that scenario. Secondly, that's once in a decade type scenario which happens. Second way to deal with it is कि यार there'll always be pockets of strength. There could Right. also be कि I'll be selling the stock and getting into a better stock which is showing more strength or where तो जहाँ पे tailwinds आ रही है, जैसे कोविड में क्या हुआ, केमिकल फार्मा को वो tailwind मिल गई. तो आई थिंक अप्रैल एंड मई के अंदर entire portfolio was built of chemical pharma stocks, Okay. right? And that 1.5 year tailwind really like led to the growth journey in terms of capital base increasing and stuff. Then today what it is built of, banks, right? Real estate, then exchanges are there, some of the capital market players are there, some of the auto ancillaries are there, right? Very few pharma companies are there, one or two which look very interesting, and only one or two chemical stocks are there. So again, today it is built on the sectors where immediate tailwinds of next 1-2 years is visible. But in a broad market correction scenario, see, what has always done well in India is healthcare has done well. Healthcare as a new sector that has come up. IT has always done IT. well. Yes. And banks have always done well in whatever cycle that you look at, 5 years each. So these are the evergreen sectors which are there, and consumption also in some of the stocks which grow in double digits, right? So there also it does well. So these crash type scenarios or volatility type scenarios, agar index level pe PE goes below 19 times, I will actually not sell. I will like try to get money from each and everywhere possible and sort of start buying them, because you know कि 2 years down the line वहाँ से there's a high probability that you will be sitting on Returns huge go up. winners. Yes, correct. Yes. I actually followed this advice. Like I think it's in the first part or some of your webinar where you have this beat Nifty using Nifty strategy. And I've been making sure to use that not just on Nifty but on the mid cap index as well. So whenever the PE will fall down, actually your risk goes down and the probability of future returns will rise. So yeah, if Nifty PE goes below yes, 20 times, that whenever strategy. Yes. Yeah. March 23 में हुई थी लास्ट. पीछे भी फॉरवर्ड पे अगर हम देखें तो 18 टाइम्स पे आ गई थी, अभी 19,000 पे जब निफ्टी आया था. That was also like a really good level for someone to sort of take exposure into these things. Right. So just taking that example of mutual funds, how would you say handle there's a person who's in their 20s just out of college starting their job, so they come to you for advice, like how do you suggest them to go? I know they've designed the financial plan, so now would you suggest them to stick to the mutual fund route because you know they will have a job and tracking businesses will be difficult, or would you still suggest if somebody is interested, how should they allocate their time to read businesses and keep track of all the news that happens? So what would be the solution to that situation? I think one of the solutions is कि आप पहली चीज तो अपने करियर पे फोकस करके कैश फ्लो बढ़ाओ, right? Focus on increasing a present value. Don't focus on just increasing the rate of return, जो compounding equation है, right? FE is equal to PV into 1 plus R raised to the power of N. तो कैश फ्लो पे फोकस बढ़ाओ, राइट? प्रेजेंट वैल्यू को बढ़ाओ. रेट अगर 1-2% कम भी है पर कैश फ्लो बढ़ रहा, टाइम बहुत है हमारे पास, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इट. सेकंड वे क्या है कि म्यूचुअल फंड और इन सारे रूट्स के थ्रू तो आप करते रहो इन्वेस्टिंग, बट सपोज इफ यू आर डूइंग दैट एंड यू गेट वेरी इंटरेस्टेड इन एक्टिव इन्वेस्टिंग, तो जस्ट पिक 5 to 10 स्टॉक्स इजी इंडस्ट्री से, जहाँ पे आपको लगता है आप ट्रैक कर सकते हो. जैसे एक केबल एंड वायर कंपनी होगी, कितना आसान है ट्रैक करना. बेवरेजेस कंपनी होगी, कितना आसान है ट्रैक करना. मतलब लिटरली 2 फैक्टर देखने हैं. एक रिटेल बिजनेस हो गया, कितना आसान है ट्रैक करना. इफ यू जस्ट फोकस ऑन सिंप्लिसिटी एंड सिंपल स्टफ फर्स्ट, तो स्टॉक पिकिंग हो सकती है ऐसी, मतलब बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरी लेस एफर्ट इन सिंपलर बिजनेसेस, आई विल पुट इट दैट वे. बट इफ यू गो फॉर कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस, जैसे आप थोड़ा डाउन द मार्केट कैप कर्व जाते हैं, you go for contract manufacturers, you start going down the market cap curve, what happens is that complexity or access to information also starts disappearing, because stock will be down 20%, someone will know something and you won't, and you start panicking. That's the way to sort of go about it, in my view. You should and you must look for easier businesses, start from an easy problem, and then sort of start increasing the hurdle rate of complexity. Can you suggest some industries? So I remember back, I think 1.5 years ago, you said mines is an easy industry to study because there are just 2 players and you can just keep track. So I was actually doing that exercise from that point on. And I think the companies have corrected a little bit, but still that I see that their valuations still seem a lot stretched.
but some people say Yeah. now that they will start going upwards. So in that scenario, should I stay away because I might have done work on the sector, but I still find that even after the correction where people are saying now the up cycle will start, the valuations look a bit stretched. So is it better to again avoid those sectors or still remain there because say they're easy to study and track? So in my case, what I do, I typically end up avoiding them because I think agar something has gone up by 17x in 2 years, huge rally. Huge rally. It will take 3-4 years for that to get digested. Base will become favorable in 3-4 years. Margins will settle down, and then again the next journey starts. Right? So स्टेज 4 में तो बेस्ट है कि आप देखो, अगर आप स्टेज एनालिसिस यूज कर सकते हो, सिंपल बिजनेसेस पे आ रहे हो, फिर अर्निंग्स आर इजी टू फोरकास्ट, जस्ट फोकस ऑन दैट. सो केबल एंड वायर्स वर द अमाइंस ऑफ 2020 in 2022, correct? तीन Right. लोग, 3 players. How difficult it is to intuitively understand the sector. Very easy, you see it on your daily basis, right? Similarly, I just think that consumption businesses, चाहे वो आपका रिटेल में क्यों ना हो, चाहे वो बेवरेजेस सेक्टर देख लो, कितना आसान था, Correct. मतलब लोग स्टिंग पी रहे Yes, हैं. I understand that CZ, but like my cognitive bias comes that whenever I look at such businesses, first of all आपका filter मुझे बहुत सी लगा, like double digit volume growth दिख रहा है simple, तो उससे हमारी बहुत सारी companies filter out हो गई उसमें. लेकिन जो मिल रही है double digit growth, market also identifies कि that this company is growing well, right? So उस case में like how do you battle the challenge of कि you think that the valuations are stretched and should you allocate incremental capital to such ideas or not? Or should you just wait and like see what happens in the future? So यहाँ पे क्या रहता है कि आपका एग्जिट फ्रेमवर्क स्ट्रिंजेंट होना चाहिए. इंक्रीमेंटल कैपिटल डालना मोर देन 2x पेग पे तो मुश्किल हो जाता है, बट सम थिंग्स जस्ट गो इन होल्ड. But today, just look at the jewelry retail sector. You will start finding companies over there जो 30-34 PE पे हैं. They're growing at 25%. Again, simple business. Look at the stainless steel sector. One guy over there, 15 PE, growing at 20-25%. Right? How difficult it is to imagine that. राइट. सिमिलरली आयरन और पैलेट का सेक्टर देख लो, 3-4 ही कंपनियां, उसमें से एक कंपनी में 20-60 20-55 तक माइंस की लीजिंग राइट है. जस्ट सिंपली लाइक जस्ट नीड टू ट्रैक 2 की वेरिएबल्स. रियलाइजेशन क्या हो रही है, इसके केपेक्स प्लान कब आ रहे हैं. आई थिंक इट बिकम्स easier as you go across sectors, but I think it's a time taking pursuit. 5-6 साल तो आपको लग जाएंगे करने में. बढ़िया इसको शंट रेजिस्टर्स में पढ़ लो, या शंट रेजिस्टर्स में पढ़ लो, एक ही बंदा है. There are not many people. Just keep tracking the valuations. When you think it has fallen to 2x peg, pull the trigger. If you understand it well, right? Because RoCs are good, asset turns are good, everything else is good, right? Right. That's fantastic. That helps a lot. Look for places where supply side is constrained. Yes. Where there are 2-3 people only there, because that helps you to sort of run away from competition. Now, suppose if as a newbie you come and start analyzing a pharma business, thinking that you're some doctor or something. What happens there? Promoter को नहीं पता यार, कल को molecule का price erode होने लग जाएगा. The best is like molecules under testing कितने kill हो जाते हैं. I saw, I think Mr. Sajal sir का webinar शायद आपका pharma वाला था. So it had this like such a huge funnel की probably hundreds of thousands of molecules are in testing and उसमें से 5 या 10 निकल के last में commercialize हो पाते हैं, where the company ends up making outsized returns on the money that they're putting in. See, वहाँ पे भी there are easier businesses like hospitals, right? So how difficult it is to understand a hospital for someone? Answer is it's really simple. इंटुइटिवली आप समझ सकते हो, क्योंकि आपको धंधा दिखता है. फार्मा का आपको धंधा कैसे दिखेगा कि दवाइयों के सॉल्ट के नाम आ रहे हैं. इफ आई जस्ट कीप 5 वाइट टैबलेट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल यू कि इसमें से क्रोसिना, बताओ कौन सी वाली है, आप बता ही नहीं सकते. Whereas hospital में there is an element of branded healthcare as well. Suppose if I ask you कि यार जो डॉक्टर त्रिहन है वो आपकी हार्ट सर्जरी करेंगे, तो यू विल बी लाइक, ओ मतलब वेदांता मेरे को जाना पड़ेगा. नाउ आई से कि कोई डॉक्टर रमेश है, किसी छोटे से हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो आपकी हार्ट सर्जरी करेंगे. हो सकता है कि हार्ट सर्जरी कराने से पहले ही आप मतलब आपको हार्ट अटैक आ जाए, राइट. So again, there is also branded element that comes into play, which matters over there, and cash flows are also much more consistent, right? So those are the type of things. Just try to focus on ये जो algebra में कहते थे ना कि ज़्यादा variables होंगे तो you'll have to do more and more cutting. Yes. Focus on companies where variables are less. आप shrimp industry नहीं पढ़ सकते as a salaried guy, because Ecuador में क्या हो रहा है, वियतनाम में क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, कोई बीमारी तो नहीं लग रही, व्हाइट शिप डिजीज तो नहीं लग रही, लग रहा है यूएस में.
राइट, कोई न्यू टाइप का कोई श्रिम्प का वो तो नहीं आ गया कि पहले टाइगर श्रिम्प था, अब एल 1MI श्रिम्प आ गया, 1MI के बाद तो कोई और नहीं आ रहा, कोई बीमारी तो नहीं लग रही श्रिम्प पॉन्ड्स में। यार इतनी चीजें सोचोगे तो वैसे ही बाल सफेद हो जाएंगे सर के। That's correct. So That's we can make the problems simpler with a simple exit strategy, simpler sectors, reasonable valuations. valuation. That's it. That's actually a golden advice. I think ये तो clip करके I think अलग से एक वीडियो होनी चाहिए अपना पूरा सेगमेंट पे. And right, so Ishmohit sir, इसमें I also remember in an early interview, I think with Jay only, that was like a fantastic interview back in 2022 March. So very less views I feel compared to the value that was there in that interview. In that you said when you're actively investing, one of the biggest difficulties that one faces is mistaking cyclical uptrends for structural changes. So like can you help, like if someone investor, I remember I made this mistake as well. Pharma में I was in a bulk pharma manufacturer, but मैं बस वो चलते गया कहानियों पे बिकता गया, stories kept coming on कि हाँ ये integrate होगा and मैं फंस गया उसमें. So how does one able to identify कि ठीक है ये cyclical है, it's not structural, I'm basically trying to fool myself? Do you have some guidance on for investors on that front? एक ही saying है कि when all else fails, remember your stop loss. Okay. That is what we have learned in the course, right? When all Yes. else fails, remember we stop. Right? Remember we stop. Because sometimes, yeah. Charts पे क्या होते हैं? Charts at the end, what is charts? Charts are nothing but a series of record of transactions, right? You start seeing big volume dumping happening. It means smart money is selling. Why is the smart money selling? Because he knows something, right? So थोड़ा सा jittery तो होना चाहिए कि जब whenever like your stock enters a stage 4 type scenario, but also sometimes you also need to ignore it. So again, that is the thing ना कि the young man knows the rule, but the old man knows the exceptions. तो वो जो चार्ली मंगर का एक सेइंग था. तो आप 5-10 साल करिए ये चीज को, आप समझ जाएंगे कि जो भी कहते हैं ना हमें सब पता है वो सब बेवकूफ बना रहे हैं. At the end of the day, it's a probability based scenario game. कई लोगों का मेरे को क्वेश्चन आता है, सर कितने साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, कितने साल की कॉन कॉल पढ़नी चाहिए. मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होता उनके लिए, क्योंकि क्या आंसर दूं उनको. कुछ के लिए मैं 2 साल की एनुअल रिपोर्ट में पढ़ के खुश हो जाता हूँ और 4 कॉन कॉल पढ़ के खुश हो जाता हूँ, बिकॉज मेरे को प्रोबेबिलिटीज मिल गई यार इसमें ऐसा ऐसा होएगा तो बस स्टॉक चल जाएगा या फिर द बिजनेस विल डू वेल. कुछ में 5 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, 5 साल की कॉन कॉल पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद लगता है साला कुछ समझ ही नहीं आया इसमें, राइट. तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं है उसके लिए, उस चीजों के लिए. तो अगेन प्रोबेबिलिटी बेस्ड इन्वेस्टिंग करो एंड स्ट्रिक्ट सेलिंग डिसिप्लिन साथ करोगे. तो सेलिंग डिसिप्लिन से क्या आएगा कि आपकी डाउन साइड 25-30% है, बट अप साइड आपकी 5-10x है. That's right. Like when what happens. Yes, and especially when you have hyperbolic moves like IRCTC or like whatever other names, whatever happens, so I feel उस case में like when you're having that being able to lock in the gains, अगर आपने वो ride करी है पूरा, तो because like very categorically have these memories were once mentioning in an interview on a webinar कि I think one of the mines company you had made a sizable return, but you felt that it's peak margins and it's peak price, so you sold. But वहां से भी वो double शायद हो गया था. So probably if you made 10x at that point, अगर वो 2x भी आप hold करते, तो you would have gone up to 20x, because for you the spiffy of effect, the base is so small. तो उस केस में I left the party early. Yes. But interesting thing is कि it came even below my selling price. Yes, definitely. No, you exited with your funda. That is, I've seen the course evolve. Like when you're mentioning the exit triggers, I'm myself trying to see my कि okay, where am I going wrong? Am I having my bias की stage 4 में भी मैंने पकड़ के रखा हुआ उसको कि नहीं ये सही करेगा. तो biases बहुत हटाता है. I feel like one of the companies I held, मतलब मैंने बहुत limited सी छोटी position थी, and I think वो defense theme में था, and it like zoomed to like 6x within like a matter of months, and I was shocked कि क्या हो रहा है इस कंपनी में. And then I looked back at my thesis and I was like, okay, ये sustain तो नहीं होने वाला. So I was just trailing कि जब निकला तो बस अब मेरी बाय बाय यहाँ से, अब इसके बाद हम देखते हैं बिजनेस क्या करता है. हाँ, जब आपका हाइपरबॉलिक रिटर्न बन जाए ना यार 1, 2, 3, 4, 6 महीने में, मतलब पैराबॉलिक हो गया स्टॉक प्राइस, it's okay to leave some money on the table for others to come in. What a wise man does in the beginning, a fool does it in the end. And the fool is the one who creates the stage 3 top. Right. Fantastic. And just I wanted to ask, like, how are you looking at averaging up? So one of the biggest mistakes I have had, like I was able to identify a good business at the right time, probably at the right valuation I entered. And then
I made the foolish mistake of keep on averaging up at instances, या फिर जब जैसे 5% नीचे गिरा तो लगा डाल दो पैसे, तो उसमें फ्रेमवर्क नहीं था. So do you have a framework for averaging up on businesses that you are holding? There are two things that you can do. First is कि peg ratio का analysis करके देख लो उसका. The second देख लो कि if it is forming another base and it is breaking out of that base particularly, तो उसी time पे you put in the incremental money. Third thing is that you can use this Donchin channels. Whenever it crosses the upper end of the channel, then you can average up. So these three things you can do. Another way is कि अगर आप valuation focused बहुत हो and you think if it has come again below in your buying range, तो put in more money. But one thing is for sure कि जो averaging up का beauty क्या है कि your buying price always remains below the current market price. Right. Averaging down का actually I've seen more people being destroyed in averaging down versus averaging up. Let's put it that way. No, that Why is do a people very get fair destroyed? perspective. Why do people get destroyed? कि they DHFL ले लिया 400 पे. हाँ, keep on catching falling knives. ईगो थी कि दिखाना यार पैसा मैं भी बना सकता हूँ. बिजनेस में पैसा बनाया तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं कर सकता. 400 का नीचे गिरा 350 पे भी लिया, 350 का 300 पे भी लिया, 260 पे भी लिया, 120 पे भी लिया, 80 पे भी लिया, 70 पे भी लिया. So what you're doing, trying to take revenge from a stock which doesn't know that you own it. Do you own it? Yes. Even I remember Yes Bank back in 2019, I was tracking it. And one day suddenly, like जो भी सब टेक्निकल जो भी लोग फॉलो करे थे, एक दिन लोगों का स्टॉप लॉस ही ट्रिगर नहीं हुआ, वो इतना नीचे गिर गया आउट ऑफ नोवेयर विद बिग वॉल्यूम्स. एंड देन बाद में पता चला कि एक्चुअली देयर इज अ फियास्को हैपनिंग इनसाइड द बैंक एंड आरबीआई इज टेकिंग ओवर. सो लाइक उस केस में आई रिमेंबर गोइंग ऑनलाइन एंड पीपल वर लाइक दैट एवरेजिंग डाउन कि वापस तो ऊपर आएगा, ये बैंक को गिरने नहीं देंगे. एंड आई वाज थिंकिंग कि तुम्हें पता लग गया कि प्रॉब्लम है, then why are you still attached so much that you are not willing to recognize the mistake? Actually, I met a very famous investor at that point of time. I don't know famous या good है या नहीं है. तो ये वो saying कि यस बैंक का लाइसेंस ही इतने का है, बैंक बनाने के लिए 5-10 हज़ार करोड़ का लाइसेंस ही, अभी मार्केट कैप भी उसके बिलो चल रही है. वहां से स्टॉक और 80% टूट गया. The idea is that stage 4 is so ferocious sometimes is that कि you must not be married to your opinion. It's okay to lose your opinion, but it's not okay to lose your money. Let me put it that way. First वो आप rule जब break करना. तब 2019 में भी देख रहे थे तभी वो स्टेज 4 में चल रहा था. उसका पहला फंडामेंटल खराब न्यूज 2016 में आया था जब आरबीआई ने एसिड क्वालिटी डाइवर्जेंस पे डेटा निकाला था. फॉर 2 years बैक टू बैक देयर वाज डाइवर्जेंस. ये आपकी कोर्स में भी आपने मेंशन की हुई केस स्टडी, आई रिमेंबर गोइंग इट थ्रू. देन आई वाज लाइक, ओह आई एम सो थैंकफुल कि आई डिड नॉट पुट माय मनी इन यस बैंक एट एनी पॉइंट इन टाइम. वर्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी नया इन्वेस्टर आता है, और ये अच्छे लोग होते हैं, आईआईटी आईएम से यहाँ वहाँ से पढ़ के आते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, मतलब कोई मतलब आईक्यू भी अच्छी होती है. आगे क्या करते हैं, वोडाफोन आइडिया ले लेते हैं, यस बैंक खरीद लेते हैं. क्योंकि दिमाग में क्या होता है, वो 10 रुपए का शेयर है, 10 15 penny रुपए का stock शेयर है. thinking. हाँ, I अब उनको wasn't आप turning. समझाने जाओ, आप समझाओ उन्हें, तो दे आर लाइक कि इवन दो दे डोंट से इट बट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि यार मैं आईआईएम का हूं, तेरे को क्या पता, मैंने तो अपने बिजनेस के अंदर इतनी सफलता वाली, इतना सक्सेसफुल हो गया, तेरे को क्या पता. तो एक्चुअली में इस बायस को ना एक बढ़िया चीज कहते हैं, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, बट इस बायस को ना एक चीज कहते हैं विच इज कि इफ यू बिकम सक्सेसफुल इन वन फील्ड then you keep thinking that you will be successful in all the other fields. And that is why a lot of people who are extremely educated, I've seen them struggling with the stock markets because they don't listen to other people. They don't think about the facts. इसको इस fallacy को ना एक term कहते हैं, which this is known as the shoe button complex. Oh, nice. Actually, I was reading Clear Thinking by Shane Parrish. उसमें इसने सिमिलर चीज को ईगो डिफॉल्ट बोला है. where your ego takes over कि like I have like done whatever achievement because of which I have this ego that I would be right, like, or who you are you to teach me. That तो शू takes बटन over. कॉम्प्लेक्स क्या है कि ये चार्ली मंगर के एक अंकल थे जिन्होंने शू बटन का बिजनेस बनाया था और ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल इन इट. सो ही स्टार्टेड थिंकिंग इज दैट कि because I've achieved success in this thing, I'll be I am successful in almost everything. every other thing. And the more successful the person that I've met, the worse investor most of them have been because shoe button complex. अब उनको कौन समझाए सर, आपको वो जूते के बटन का कॉम्प्लेक्स है. So they don't. A lot of them also are very good listeners. Then they listen, and then they sort of change. Then they learn and stuff. But a lot of them don't listen, and तभी फिर स्टोरीज बाहर आती है कि यार मार्केट में बर्बाद हो गए, एफएनओ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. Those type of stories start coming out. That is difficult.
Ishmael, just like let's have a couple of last questions. Like one thing I'm really interesting to know is I want to know is like how do you build a network when you're investing? Like as you told it's like a very individualistic sport. Like very, it's not like you will share a lot with other people, and sometimes a lot of people will not understand what you're doing. So you've definitely increased your network over the years. So what would be your advice to somebody who is like a beginner or an intermediate investor today? How do they expand their network? वैल्यू पिकर पे चले जाओ, प्रोफाइल बना लो, स्टार्ट पोस्टिंग गुड एंड सॉलिड स्टफ. डोंट पोस्ट थिंग्स लाइक कि दिस हैज फॉलन अ लॉट, शुड आई सेल इट और शुड आई बाय इट, बिकॉज पीपल विल आल्सो स्टार्ट थिंकिंग कि यार उस लेवल पे नहीं है बंदा, क्या चीजें पूछ रहा है, राइट? Post good stuff on businesses, post good insights. People themselves start reaching out to you. You can connect with them. Good investors are humble investors, and they are very easy to reach out to. They network with you, talk to you. Go to AGMs of companies. आपको वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर मिलेंगे, उनके साथ नेटवर्क क्रिएट करो. ऐसे ऑफलाइन इवेंट्स पे आया करो, जैसे हम SOIC के इवेंट्स करते हैं. If you come on those events, so what happens is that आपके ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, लाइक माइंडेड पीयर्स मिल जाते हैं आपको. So that is how you can leverage. जैसे CFA society के events होते हैं, you should go to them, because you will find a lot of people in your age cohorts, and you'll also meet a lot of other interesting investors which can help you to basically again NOS in your own journey, like NOS लगा सकते हो, right? Because sometimes good ideas also come from the network. Yes, definitely they do. I realize that. That is great. So basically be a person of value and then be proactive in reaching out with and working with others. Correct. Yes, yes. And just like Ishmohit, like what have been some of your favorite tools when it comes to investing that have helped you in your journey? Like everybody is using Screener and Tijori. So what would be like top 2 or top 3 tools that you've like really found useful, especially in the Indian context? Yeah, I love to read con calls. Marketsmith is a good tool to have. Screener is a good tool to have. Tijori is a good tool to have. We have made our own custom tool, stock scans करके. That is a good tool जो personally हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उसमें reverse DCF बैंक्स का भी कर लेते हैं book value per share के ऊपर. Then trading view is a fantastic tool to have, because you can set alerts on your trade indicators and stuff. So these are 5-6 tools which I personally like to use a lot in terms when it comes to my own investing journey, for screening ideas and also for setting alerts if we are going wrong somewhere, so they can sort of give us a trigger. Oh, that's great. Stock scan, like, are you going to like release it for public or the tribe anytime soon? Eventually we might, but अभी उसमें क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफी चली गई है, तो अभी तो हम अपने लिए स्टॉक आइडियाज काफी जनरेट कर रहे हैं उधर से, तो हम लोग रिलीज तो करेंगे उसको डेफिनेटली, बट सिर्फ पहले ट्राइब के लिए करेंगे, नॉट फॉर द आउट लाइक कंप्लीटली आउटसाइड. Great. Just last question from my side, Ishmohit, like what would be the top 3 things you would tell to not do in investing? Like as Charlie Munger says, you have to invert. So a lot of people ask, what should I do? What should I buy? So what would you say to not do while somebody is trying to like be involved in active investing? First thing is that I will say don't do FNO. That is for sure. अगर आप इक्विटी कैश में ही कर रहे हो, डिलीवरी ले रहे हो स्टॉक की, तो आप कॉन्ट्रेरियन इन नेचर हो. Second thing that you must not do is that you must not invest in a company without understanding it. A brief understanding तो होनी चाहिए, because otherwise conviction नहीं आएगी. And third thing that you must not do is that you must protect like yourself from yourself by respecting position sizing. तो अगर आप सारी चीजें एक स्टॉक में 70% डाल दो, the stock tanks, you are out of the game. So you must be a survivor, right? So that is the last thing that you must not do, is that you must not put your survival at risk. Great. That is just fantastic. And Ishmohit, any like particular student that comes to your mind, like some really interesting story out of this SOIC journey, like you've connected with someone and you like blown away कि okay, this person, or you remember their story कि उन्होंने कोई बहुत interesting question पूछा आपसे that helped you grow? यार एक्चुअली डेली बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग सॉल्व करते रहते हैं, बट आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु asked us to like 2.5 years back, ये particularly asked us कि सर कोई exit framework पे क्लास बनाओ. So then that is what triggered this entire course on how to exit a stock. तो that ideas वहीं से आते हैं, हम तो बस implement करते हैं. क्रैश कोर्स भी एक स्टूडेंट का आइडिया था, तो उसको हमने लगा लिया, राइट? तो that is how it goes. अभी मेटल एंड माइनिंग पे एक वेबिनार करा रहे हैं, वो भी एक स्टूडेंट का आइडिया है, क्योंकि किसी ने आज तक नहीं करा, तो हम लोग सोचा हम भी कर लें. तो आइडियाज तो दे कीप कमिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ एरियाज.
That's great. And I hope, Ishmohit, you continue to do work. Like, I feel you are at the forefront of Indian investing scene, like with these webinars and especially your YouTube videos. Like, they're like goldmine content for not just retail investors. I feel a lot of institutional people who are working with brokerages firms or research firms, they will definitely be using your resources as a like a key starting point, or at least a key indicator in their own research. So, and I hope the SOIC and you all, as they say in Punjabi, chaddi kala mein rahe, that you Right. keep improving. Thank you so much. Thank you so much for sparing out your time. I know you've been busy and you also have to be traveling tomorrow. Thank you so much for this insightful session. I hope everybody loves this, and keep imparting value as you always have. Thank you so much. Thank you so much, Jotpreet. Thank you so much for hosting us. Thank you.